Morning dear students, today we are going to start with the last part or the last rule of the nomenclature. Before this, just recollect the nomenclature or we need to revise. Children, I have already explained you rules for naming the organic compounds. First is selection of the carbon chain. Okay. The second rule is the numbering of the carbon atom. The third rule is the functional group rule. Okay. Then we have the fourth rule, okay, different functional group or types of substituents. So I have given you, okay, for halogens how we will write the name and how we will prefer the different functional group on the basis of the seniority level. Okay, now the last rule is the rule says that is rule number 5. You need to remember rule number 5. You need to remember, if the position of the, we need to write the position of the alkyl group. Okay, how we will write? Position of alkyl groups, position of alkyl groups are indicated, they are indicated by writing the position and name of the alkyl group just before the name of parent hydrocarbon, just before the name of parent hydrocarbon. Okay, so this rule I have already explained you previously only, that prefix plus root word plus suffix, this we need to remember. Okay, so prefix is nothing but it is your any alkyl group or the substituent which we will indicate by writing the position, and also the position and the name should be written before the parent hydrocarbon. So this example I have already solved, yes or no, many times. Say for example I have written 5-chloroheptane to all. So here heptane is the root word or the parent word, 5 is the position of the alkyl group which is written before. Okay, the last rule now the last rule, that is rule number 6, says that if we have multiple alkyl groups, now in this case what we will do, if we have multiple alkyl groups in the chain, firstly you need to remember smaller alkyl groups. First thing is smaller alkyl groups gets least position. Okay, they get least position. Say for example CH3 is methyl, yes or no, and C2H5 is ethyl. Now out of these two we will not see the name, we will not prefer the name, we will see which alkyl group is smaller. So which is smaller? Methyl group is a smaller alkyl group, no matter what is the condition, but we will give the least possible number to this alkyl group as compared to this. For example, such example I am giving you. For example, CH3, CH, CH3, CH, C2H5 and CH3, suppose. Okay, now in this case let us see and discuss. See, smaller alkyl group should get the least position. See here, now I have selected the longest chain, 4 carbon atoms. Okay, now in this case from where I will do the numbering? Suppose I am doing the numbering looking at the rule saying that smaller alkyl group should get the least position. So this is my smaller alkyl group, yes or no? It is a smaller alkyl group, so I should give the least position to this alkyl group, yes or no? So say 1, 2, 3, 4. This is the correct method. If I will give the numbering from here 1, 2, 3, 4, then this method is wrong. This numbering method is what? Wrong. So the correct numbering is this. Okay, so what will be the name now?
what will be the name? Now see here, its name is methyl and this is ethyl. ओके अब देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है. नंबरिंग हम मिथाइल को ही स्मॉलेस्ट देंगे, लेकिन लिखने के टाइम पे हम किसको पहले लिखेंगे? वी विल प्रिफर द alphabetical order. So see here, what will be its name? 3 - ethyl. Okay, then hyphen 2 methyl, second position पे है ना, ठीक है. Now see, don't see the position is smaller, then we will give the name first. Position should be given smaller, but writing will be in the alphabetical order only. Now further, what is the name of the compound? Butane, because 4 carbon atoms are there and the chain is what? Single bonded. The chain is what? Single bonded chain. Are you getting? Are you getting? I hope that you are able to understand. Now see, suppose the next, this is the first rule for the multiple alkyl group. Now the next rule says that if 2 alkyl groups are same, okay, attached on the same position also, then how we will do the numbering? Say carbon CH3, CH2, C, CH3. Here also we have CH3, here also we have CH3. Now in this case how I will do the numbering, children? Just to see, first I have to select the chain 1 2 3 4, 1 2 3 4. ऐसे भी जाओ तो भी 4, ऐसे भी जाओ तो भी 4 4, और स्ट्रेट जाएंगे तब भी 4. Yes or no? So in this case what I will select? The straight chain. I am selecting the straight chain. Now how I will do the numbering of this straight chain? CH3, CH2, C, CH3. Here also is CH3 and here also it is CH3. So I have done the numbering this way. So from which side I will start the numbering? From the right hand side, children. Now why right hand side, children? Because on second position there are 2 alkyl groups. So numbering is 1 2 3 4. Okay, now what will be the name of such compound? Because on the second position we have 2 similar alkyl groups present. Yes or no? So what will be the name of the compound? The name of this compound will be 2,2, because on the second position there are 2 groups. Now both of them are methyl, so I will use a Greek this word, that is di. Okay, 2,2 dimethyl, and the compound is butane. 2,2 dimethyl butane. I hope that you are getting this thing. Okay, in the multiple alkyl group rule, the first rule is smaller alkyl group should get least position. Okay, the next rule says that if the multiple alkyl groups are same attached, okay, then we will use the numerical prefixes like di for 2, tri for 3. Okay, now see here, rule number 6 is for multiple alkyl group. So first is smaller alkyl, then it should get least position. Okay, now if similar alkyl group are attached in the chain, no matter what is the position. Okay, ज़रूरी नहीं कि position same ही हो, different position पे भी लेकिन same alkyl group है, then we will give the Greek numerical prefixes. Now what prefix we will use? If there are 2 alkyl groups, then we will use di. If there are 3 alkyl groups, then we will use tri. Okay, if there are 4 alkyl groups, then we will use the word tetra. Okay, I hope that you are getting. Now let us see the example. See here, CH3, CH2, 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 CH, CH, CH3. Here also CH3, CH3.
Okay, now see, we will select first longest chain ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे तो इधर तक 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं स्ट्रेट ले रही हूँ, स्ट्रेट चेन. इट कंटेन्स 7 कार्बन एटम. नाउ फ्रॉम विच साइड आई विल डू द नंबरिंग चिल्ड्रन? बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम. तुम देख कर ही बता सकते हो कि नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी. ठीक है, सी 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now see here, on the second and the third position there are two alkyl groups and both of these alkyl groups are same, that is they are methyl groups only. They are methyl but their position is different, है ना. So now what will be the name? First I will write the name 2,3 because दोनों पोजीशन पे सेम ही alkyl group है तो मैं एक ही बार उसका नाम लिखूंगी. 2,3 dimethyl. Now what is the name of this compound? Hept, because 7 carbon atom single bonded है तो ANEane. Okay, I hope that you are getting this part. Okay, there is no confusion. Okay, so this is the rule for, this is the last rule, that is multiple alkyl group rule. Okay, so I hope that you are able to understand till here. Now let us do some of the examples. Okay, I am solving some examples so that you are able to understand. Now we haven't used any of the double bond or triple bonds. I am giving you the example of double and triple bonds. See here, CH3 CH double bond CH CH2. अब देखो चिल्ड्रन, फर्स्टली हमको चेन सिलेक्ट करनी है. सॉरी, दिस इज CH3. बॉन्ड शुड बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट हमको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी चेन. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. फ्रॉम विच साइड आई विल गिव द नंबरिंग? आई कैन गिव द नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड. इस चेन में मैं कहीं से भी दे सकती हूँ. वाई? बिकॉज द डबल बॉन्ड इन द चेन इज कमिंग ऑन द सेकेंड पोजिशन. आइदर यू काउंट फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड. देखो 1 2 3 4 1 2 3 4. दिस डबल बॉन्ड इज गेटिंग सेकेंड पोजिशन ओनली. तुम कहीं से भी आओ तो इसमें क्या है, दोनों वे करेक्ट है. अब इसका नाम कैसे देंगे हम लोग? बिकॉज ये ब्यूट चेन है. रूट वर्ड क्या है इसकी? ब्यूट. रूट वर्ड इज ब्यूट. ओके, नाउ सी हियर चिल्ड्रन, एट व्हाट पोजीशन इज द डबल बॉन्ड? से आई एम डूइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो द पोजीशन इज सेकेंड. -2 -. ओके, नाउ व्हाट इज द डबल बॉन्ड? इट इज एल्कीन. एल्कीन है ना, तो एल्कीन का हमको क्या चाहिए? ENE चाहिए. तो ब्यूट-2-ene. ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. ओके, से फॉर एग्जाम्पल इज CH2 double bond CH3. This is the example. Okay, this is for double bond. Okay, so from where I will start the numbering? Longest chain numbering will be started from the left hand side. क्यों children? Because left hand side first position आ रहा है किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए. So 1 2 3. सी 1 2 3 सेकेंड पोजिशन मिल रहा है तो ये वाली नंबरिंग क्या होगी? रॉन्ग होगी. वी विल फॉलो दिस नंबरिंग. नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी व्हाट? सी हियर 3 है ना, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोप. हाइफेन कौन से पोजीशन पे? 1. हाइफेन कौन सा ग्रुप है ये? डबल बॉन्ड ENE, प्रोपीन. ओके, सपोज अगर ग्रुप में 2 डबल बॉन्ड्स हैं. ओके, सपोज इन द ग्रुप देर आर 2 डबल बॉन्ड्स. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल हियर. सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH double bond CH, CH3. Okay, see here. Now there are 2 double bonds in the group. Now from which side you will start the numbering first? See here. इस ऐसे कंडीशन में हम एडिशन वाली ट्रिक लगाएंगे. सी 1 2 3 4 5 6 7. इस फर्स्ट केस में सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन आ रही है. 2 + 5 है ना, तो कितना हो गया? 7. यस और नो? 2 + 5 क्या हो गया? 7. अब यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7। अब जब मैंने राइट हैंड साइड से किया है तो इधर सेकेंड और 5, इधर भी सेकेंड और 5 आ रही है, तो 2 + 5 = 7। ठीक है, अगर इस केस में अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एडिशन करके देखना है, जो लीस्ट एडिशन आएगा वही सही होगा। नाउ आई कैन गिव द नेमिंग, येस और नो। नाउ देयर आर 7 टोटल 7 कार्बन एटम्स इन द चेन, सो आई विल राइट व्हाट हेप्ट। ओके, हेप्ट। अभी देखो पोजीशन डबल बॉन्ड की कौन कौन सी है, 2 पोजीशन है और एक 5th। देखो ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और ये 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सो आई विल राइट -2,5। ठीक है, हाइफेन। अब दोनों ग्रुप कौन से हैं, इन के हैं और सेम है, तो मैंने ग्रीक प्रीफिक्स लगाया डाई, ENE, इन, डाइन। आर यू गेटिंग? 2 फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो मैंने उसको भी ग्रीक प्रीफिक्स लगाया है, उसके पोजीशन को डिनोट करके। ये चीज़ तुमको याद रखना है, वर्ड फिर हाइफेन नंबर फिर कॉमा फिर नंबर हाइफेन वर्ड। ओके, अल्फाबेट्स। सो दिस यू हैव टू लुक। ओके, नाउ इन दिस केस लेट अस से फॉर एग्जांपल इन द चेन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, suppose in the chain there is a triple bond, see CH3 CH2 C triple bond C CH2 CH3। सिंगल बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ही हमको मतलब है। सी हियर, नाउ इन दिस केस फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट द नंबरिंग, यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड बिकॉज द थर्ड पोजीशन इज कंटेनिंग द triple bond. So now what is the total number of carbon atoms here? 1 2 3 4 5 6. Okay, so it is what, hex hyphen 3 hyphen INE। क्यों YNE? एल्काइन ग्रुप से, एल्काइन का YNE होगा, ट्रिपल बॉन्ड इज YNE। Okay, I hope that till here you have understood. I will solve some of the more examples. Okay, and so till then you just solve till here. Thank you.